Hello and welcome back. Good morning. Today we are going to talk about Robert Browning's work, which is Last Ride Together. तो यू ऑल नो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग किस चीज के लिए फेमस है? ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए. लास्ट राइड टुगेदर इज ऑल्सो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विच एक रिजेक्टेड लवर है who is reflecting upon his emotional experience during a final ride with the woman he loves. तो ये सेटिंग है. एंड दो हिज लव हैज फेल्ड टू सिक्योर पोजेशन और उसको रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, ही एक्सेप्ट्स रिजेक्शन विद डिग्निटी रादर देन डिस्पेयर. ऐसा नहीं है कि उसको यू नो सम काइंड ऑफ लवर्स उनको रिजेक्शन मिलने पे देयर ईगो गेट्स हर्ट एंड दे टेक रिवेंज, दे टेक दैट आउट ऑन द गर्ल और द बॉय. But here the lover is accepting it with dignity, and this ride becomes a symbolic space, where time is suspended, allowing the speaker to transform personal failure into philosophical affirmation. तो जैसे जैसे वो राइड करते हैं, जो स्पीकर है वो मूव करता है फ्रॉम इनिशियल रेजिग्नेशन टू इमोशनल एग्जॉल्टेशन, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑन द यूनिवर्सल नेचर ऑफ फेलियर, पॉलिटिकल, आर्टिस्टिक, मिलिट्री, रोमांटिक, सब तरह के फेलियर. और ये कंक्लूड करता है दैट नो ह्यूमन एफर्ट फुली रियलाइजेज इट्स आइडियल. Poets, sculptors, musicians, statesmen, soldiers all fall short of their ambitions. Their achievements are either incomplete, या वो ट्रांजिएंट होता है, या फिर इट्स रिड्यूस टू ब्रीफ हिस्टोरिकल रिमेम्बरेंस. तो इन कॉन्ट्रास्ट जो स्पीकर है वो वैल्यू कर रहा है उसका इमीडिएट जो लिव्ड एक्सपीरियंस है उसको, द एक्ट ऑफ राइडिंग बिसाइड द बिलवेड as superior to public glory or artistic immortality. तो जो पोएम है वो कल्मिनेट होती है इन अ वेरी स्पेक्युलेटिव रीडेफिनेशन ऑफ हेवन रादर देन अ डिस्टेंट perfected afterlife. Heaven is imagined as the eternalization of life's most intense moments. जो स्पीकर है वो सजेस्ट करता है कि जो फुलफिलमेंट है इट लाइज नॉट इन एब्सोल्यूट अटेनमेंट बट इन कंटिन्यूड स्ट्राइविंग एंड कंपेनियनशिप. तो एक फाइनल इमेज आती है ऑफ एंडलेस राइडिंग. इट अफर्म्स मूवमेंट कि हम लोग चलते जाते हैं, वी मूव ऑन, डिजायर एंड प्रोसेस ओवर status and completion. Let's look at the poem. कहाँ पब्लिश हुआ था? मेन एंड वुमेन में 1855 में. एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग का फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट, सारे ही बहुत अच्छे हैं इनके, तो किसी एक को ऊपर रखना इज वेरी डिफिकल्ट. एंड ये लव, रिजेक्शन, डिजायर, टाइम, ट्रांसेंडेंस को इन्होंने एक्सप्लोर किया है थ्रू अ सिंगल इंटेंस इमोशनल मोमेंट. जो पोम है वो एक लवर बोल रहा है, उसको रिजेक्शन मिला है एक वुमन से जिसको वो प्यार करता था. तो इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेपरेशन उसको क्या ग्रांट हुआ है? वन फाइनल राइड टुगेदर, एक लास्ट राइड लेते हैं टुगेदर. एंड द पोम कैप्चर्स हिज इनर रिफ्लेक्शंस ड्यूरिंग दिस राइड, not the woman's voice, typical of Browning's monologic technique. तो ये थीम्स हैं लव रिजेक्शन की, मोमेंट वर्सेस इटर्निटी की, ह्यूमन लिमिटेशन और एस्पिरेशन की, फिलॉसफी ऑफ एक्सेप्टेंस की कि एक्सेप्टेंस भी जरूरी है, फेलियर नेचुरल है, डिजायर नोबल है, फुलफिलमेंट लाइज इन द अटेम्प्ट नॉट द रिजल्ट. ठीक है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, राइम स्कीम ए बी सी है, और रिफ्लेक्टिव टोन है, इमेजरी सनसेट लैंडस्केप विच सजेस्ट्स मोशन, वो है. अब हम चलते हैं स्टैंजा पे. द लास्ट राइड, wait, the last ride together poem by Robert Browning. Okay, I said, the first stanza मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद we'll go on to talk about it. I said then, dearest, since it is so, since now at length my fate I know, since nothing all my love avails, since all my life seemed meant for fails. अभी context पता है तो आपको समझ में आएगा. I said then, dearest, कि अगर ऐसा है, since it is so,
Since now at length, मुझे पता है मेरा फेट क्या है. Since nothing all my love avails, since all my life seemed meant for fails, जिसके लिए मुझे लगता था कि मेरी तो ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए बनी हुई है, वो फेल हो रहा है. Since this was written and needs must be, my whole heart rises up to bless your name in pride and thanklessness and thankfulness, sorry. Take back the hope you gave, I claim, only a memory of the same. And this beside, if you will not blame your leave for one more last ride with me. How sweet. तो स्पीकर शुरू करते हैं बाय डायरेक्टली एड्रेसिंग हिज बिलवड. सिंस इट इज सो, कि अगर ऐसा है, is his rejection is already final and accepted. Since now at length my fate I know, since I know my destiny, it's very clear now that we're going to break up. Since nothing all my love avails, despite the depth, the sincerity of his love, it has had no effect. तो उसका लव फेल हो गया है. सिंस ऑल माई लाइफ सीम्ड मेंट फॉर फेल्स. द वुमन वॉज द सेंट्रल पर्पस ऑफ हिज लाइफ एंड उसका रिफ्यूजल से वो कलैप्स हो गया मीनिंग. सिंस दिस वॉज रिटन एंड नीड्स मस्ट बी, तो वो फेटलिज्म को इन्वोक कर रहा है. द फ्रेज इंप्लाइज दैट इवेंट्स वर प्री ऑर्डेन्ड, रिटन बाय फेट. सिंस दिस वॉज, अगर ऐसा ही लिखा था हमारी किस्मत में और अगर ये अनअवॉइडेबल था, माई होल हार्ट राइजेस अप टू ब्लेस योर नेम इन प्राइड एंड थैंकफुलनेस. सो मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई बिटरनेस नहीं है, कोई एंगर नहीं है. मेरा पूरे दिल से तुम्हें ब्लेस करता हूँ और तुम्हें थैंक यू करता हूँ. आई हैव नो रिजेंटमेंट. लविंग हर बिकम्स अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर हिम. टेक बैक द होप यू गेव, आई क्लेम, कि तुमने जो मुझे वादे किए थे ना वो वापस ले लो. ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम. आई एम फाइन विद द मेमोरी, ओनली द मेमोरी ऑफ हैविंग लव्ड हर. Memory replaces possession here. And this beside, if you will not blame, with humility and politeness, he cautiously adds one final request. अगर तुम इसको मना नहीं करोगी तो your leave for one last ride with me. तुम जा रही हो तो मुझे एक लास्ट राइड देती जाओ अपने साथ. एक फाइनल राइड तुम्हारे साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ. नाइस. My mistress bent that brow of hers. Those deep dark eyes were pride dimmers. When pity would be softening through, fixed me a breathing while or two, my life or death in the balance, right, the blood replenished me again. My last thought was, at least not vain. I and my mistress, side by side, shall be together, breathe and ride. So one day more am I deified? Who knows? But the world may end tonight. तो अब उसकी मिस्ट्रेस ने ऐसे किया होगा. शी मस्ट हैव बेंट हर ब्राउज. दोज डीप डार्क आईज वेयर प्राइड डेमर्स व्हेन पिटी वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू. तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं ये ब्राउनिंग. इट्स लाइक पूरा कॉन्वर्सेशन वो हमारे साथ कर रहे हैं. ड्रामेटिक एक सीन क्रिएट कर दिया है. ऑफ कोर्स द स्पीकर, द लिसनर इज देयर बट इज नॉट स्पीकिंग बिकॉज इट्स ड्रामेटिक, इट्स अ मोनोलॉग. तो कह रही हैं कि जो स्पीकर है वो वुमन को ऑब्जर्व कर रहा है. बेंडिंग ऑफ द ब्राउ सजेस्ट हेजिटेशन की. अच्छा, एक लास्ट राइट तुम्हारे साथ. हर आईज रिफ्लेक्ट प्राइड दैट रेजिस्ट yielding. Demurs indicates reluctance. She's not easily moved by emotions. So those deep dark eyes were where pride demurs when pity would be softening through. Though she feels pity for him, of course, because he loves her, her pride prevents that pity from turning into emotional surrender or love. कि ऐसे नहीं, यार चल ठीक है, मतलब नहीं करते ब्रेकअप. हो जाता है ना ऐसा कि आपका लड़ाई हुई तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने सॉरी बोला, 2-3 प्यार के शब्द बोले और फिर से हो गया पैचअप. Fixed me a breathing while or two. So she looks steadily at him for a brief moment. Fixed me. This pause is intense and suspenseful. कि क्या बोलेगी? With life or death in the balance, right? Okay. So this decision feels momentous, emotionally life-giving or devastating. ये जो exclamation है, right? It conveys a very sudden relief and affirmation. The blood replenished me again. So the speaker experiences a physical revival. कि मतलब खून दौड़ने लगा पूरी बॉडी में. My last thought was at least not vain. कहता है कम से कम मेरा जो ये last thought था तो वो बेकार का नहीं था. It was not vain. He realizes that his final appeal
has not been useless. It has achieved something meaningful. Oh, God. Just a minute, please. Just a minute. Sorry about that. Okay. So he says, my last thought was at least not vain. तो मेरा last thought बेकार का नहीं था. I and my mistress side by side shall be together, breathe and ride. मतलब वो मान गई. अब हम साथ में चलेंगे और हम लोग एक last ride करेंगे. So one day more am I deified. अब मुझे एक और दिन मिल गया to be near her, to be with her. It feels like God, एक God like fulfillment उसको मिल गई. You deified. Who knows but the world may end tonight. क्या पता आज ही दुनिया खत्म हो जाए और हम साथ में हो. Hyperbole. है ना? A single perfect moment can equal eternity. कि ठीक है यही है. If the world ended now, the speaker would be satisfied. उस रूम में चले जाओ. Next, hush. If you saw some western cloud, all billowy bosomed, overbowed by many benedictions, suns and moons and evening stars at once, and so you, looking and loving best, conscious grew, your passion drew, cloud, sunset, moonrise, star shine too, down on you, near and yet more near, till flesh must fade, for heaven was here. Thus lent she and lingered joy and fear. Thus lay she a moment on my breast. क्या कह रहे हैं? Hush. If you saw some western cloud, drawing attention to the moment of silence here. He invites the reader. Imagine करो कि अगर आपने एक natural scene देखा हो, some western cloud, all billowy, bosomed, overbowed. The cloud is described very sensuously, billowy, bosomed, which suggests fullness and softness. Overbowed implies what? Some weighed down, preparing for symbolic meaning, of course. All billowy, मतलब एक fully एक cloud with softness, overbowed, झुका हुआ by many benedictions. And the cloud is metaphorically blessed by all the things around, by the sun, by the moon, by the star. तो सब कुछ है. Sun warmth देगा, moon कुछ भी बोल लो आप, कोल्ड कूलनेस देगा आपको, ब्यूटी देगा. Multiple celestial bodies illuminate the clouds simultaneously, creating a sense of cosmic harmony and transcendence beyond ordinary experience. And so you looking and loving best, और तुम साथ में, just as the cloud receives many blessings, the beloved, at her most loving, becomes conscious of overwhelming emotion. And so you, looking and loving best, conscious grew, your passion drew. Her awareness deepens, passion intensifies, pulling external beauty inward. Cloud, sunset, moonrise, star shine too. Natural splendor is internalized. The beloved becomes the center in which all beauty converges. तो कह रहे क्लाउड सनसेट मून राइज स्टार शाइन सब तुम्हारे ऊपर, डाउन ऑन यू, नियर एंड येट मोर नियर. तुम ऑलरेडी इतनी सुंदर लग रही हो, लविंग बेस्ट, लुकिंग बेस्ट, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन यू. Repeated closeness suggests increasing emotional also and physical intimacy. Till flesh must fade for heaven was here. मतलब इतना सब कुछ तुम्हारे ऊपर इतने अच्छे से ये सब आए कि फ्लैश वुड फेड एंड ऐसा लगे कि हेवन ही यहाँ पे उतर आया है. एंड दिस मोमेंट ट्रांसेंड्स फिजिकल ब्यूटी. मतलब कोई तारीफ करना सीखे तो ब्राउनिंग से सीखे. Honestly, I mean, all of his poems are like that. Bodily awareness dissolves, it is replaced by a near spiritual ecstasy. Thus, lent she and lingered, joy and fear. The woman leans towards the speaker. थोड़ा hesitate भी कर रही है, थोड़ा उसको joy भी है, लेकिन डर भी है. This balance of emotion underscores the intensity of the moment. Thus lay she a moment on my breast. और फिर थोड़ी देर के लिए, लेकिन बहुत powerful physical intimacy. The contact, she keeps maybe her head
wherever on his chest. So the contact is fleeting, reinforcing the poem's theme of momentary fulfillment. Next, then we began to ride. My soul smoothed itself out, a long, cramped scroll, freshening and fluttering in the wind. Past hopes already lay behind. What need to strive with a life awry? Had I said that, had I done this, so might I gain, so might I miss, might she have loved me? Just as well she might have hated. Who can tell? Where had I been now if the worst befell? And here we are riding, she and I. So, next, fourth stanza. Fourth stanza. Then we began to ride. My soul smoothed itself out a long cramped scroll. So he says, with my physical movement of riding, so they're going on a last ride, the speaker signals एक inner shift. कहता है मेरे एक्शन जो है वो इनिशिएट उसके जो एक्शन है वो इनिशिएट कर रहे हैं कि इमोशनल रिलीज को. माई सोल स्मूथ इट सेल्फ आउट कि मतलब एकदम शांत हो गया सब कुछ अंदर. अ लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रोल. द सोल इज कंपेयर टू अ टाइटली रोल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. बहुत टाइट कोई आपने मैन्यूस्क्रिप्ट को फोल्ड किया है. कितनी टाइम से मेरी सोल एक क्रैम्प्ड थी उस तरह से बिल्कुल, और अब वो स्मूथ आउट हो रही है उसके साथ. हाउ नाइस. Freshening and fluttering in the wind, past hopes already lay behind. The unfurling scroll flutters freely, symbolizing emotional liberation. Fresh, fluttering in the मतलब उसकी सोल जो है वो हवा में उड़ रही है, ऐसे फ्रीडम उसको मिल रहा है. जो पुरानी होप्स थी ऑलरेडी ले बिहाइंड, अभी छोड़ दो उन सब चीजों को. What need to strive with a life ori? So he questions the usefulness of resisting fate. कि कौन लड़ सकता है फेट के साथ. एक्सेप्टेंस, यू अगर आप एक्सेप्टेंस करते हो आपकी लाइफ विल बी इजियर. एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तो तड़पती रहेगी आत्मा. हैड आई सेड दैट, हैड आई डन दिस, सो माइट आई गेन, सो माइट आई मिस. वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हाइपोथेटिकल ऑल्टरनेटिव्स पे कि क्या मैंने ये किया होता या वो किया होता, क्या मुझे मिला होता, क्या मुझसे छूट गया होता. माइट शी हैव लव्ड मी, अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या आउटकम कुछ डिफरेंट होता, क्या वो मेरे साथ होती. शी माइट हैव हेटेड, क्या पता मैंने वो किया होता तो मुझे और हेट करती. कौन बोल सकता है, कौन बता सकता है. वेयर हैड आई बीन नाउ इफ द वर्स्ट बिफेल. तो ही कंसिडर्स दैट सर्कमस्टांसेस कुड हैव बीन इवन वर्स्ट. आज वो मेरे साथ लास्ट राइड पे तो है, क्या पता इससे भी बुरा कुछ हुआ होता. Some people break off uh, at a very bad situation. Some people are still friends even after they have broken off. So कुछ भी हो सकता था. And here we are riding, she and I. तो एक काम affirmation है कि ठीक है जो हुआ ठीक हुआ. Because here at least we are together and riding. There's no hatred in our hearts towards each other. Fail I alone in words and deeds? Why all men strive, and who succeeds? We rode, it seemed my spirit flew, saw other regions, cities new. Fail I alone in words and deeds? क्या कह रहे हैं? एक rhetorical question है, challenging the idea that his failure in love is unique. मतलब इस तरह से क्या मैं ही फेल हुआ हूँ. वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स. तो अपना एक्सपीरियंस को रियलाइज कर रहा है, असर्टिंग दैट स्ट्रगल तो यूनिवर्सल है और सक्सेस बहुत रेयर है. सब लोग किसी ना किसी चीज में स्ट्राइव कर रहे हैं. कौन है जो कह रहा है कि हाँ मैं कामयाब हो गया. वी रोड, इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू. तो जैसे जैसे हम लोग वी वर टुगेदर, मेरी तो स्पिरिट एकदम उड़ रही थी आसमान में. हमने अदर रीजन्स देखी, नई नई सिटीज देखी. एज द वर्ल्ड रश्ड बाय ऑन आइदर साइड, I thought all labor, yet no less bear up beneath their unsuccess. Look at the end of work, contrast the petty done, the undone vast. This present of theirs with a hopeful past. I hoped she would love me. Here we ride. So, as they are riding, it elevates his consciousness. Physical movement produces spiritual expansion.
He imagines broader worlds beyond this immediate sorrow. Other regions, cities knew as the world rushed by on either side. कि दुनिया तो पूरी चल रही थी, rushed कर on either side. It reinforces detachment from personal disappointments and immersion in the present. I thought all labor yet no less bear up beneath their unsuccess. तो कह रहा है कि he reflects on this human effort in general. कि सब लोग लेबर तो कर रहे हैं अनसीजिंग स्ट्रेनुअस है ना people endure failure with resilience unsuccess is presented as a shared human condition look at the end of work contrast वो कह रहा है कि देखो look at the end of work और contrast करो the petty done the undone vast human achievements appear very small compared to unfulfilled potential लिमिटेशन पे यहाँ पे ध्यान दिलवा रहे हैं दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स with their hopeful past जो contrast है between present reality and the past hope underscores disappointment as a universal experience I hoped she would love me but अब यहाँ तो हम लोग राइट कर रहे हैं पहले यूनिवर्सल पे जाके फिर पर्सनल पे आ जाते हैं अभी तक यूनिवर्सल बात करी देखो लोगों को देखो ये सब लेबर कर रहे हैं सब कौन सक्सीड हो रहा है ये वो I hoped she would love me, and here we write. What hand and brain went ever paired? What heart alike conceived and dared? What act proved all its thought had been? What will but felt the fleshly screen? So he says, hand, action. Whether action and thought ever perfectly coincide. क्या हम सोचते हैं और क्या हो जाता है या क्या करते हैं क्या वो कभी होता है कोइंसाइड तो गैप तो है आ ही जाता है इंटेंशन और एग्जीक्यूशन में व्हाट हार्ट अलाइक कंसीव्ड एंड डेड कौन सा वो दिल है हु हैव कंसीव्ड एंड डेड हार्ट इमेजिन समथिंग नोबल इट ऑफन लैक्स द करेज टू एक्ट फुली द ह्यूमन एस्पिरेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट व्हाट एक्ट प्रूव्ड ऑल इट्स थॉट हैड बिन So no single action ever realizes the totality of the idea behind it. And what will but felt the fleshly screen? The human will is obstructed by the physical body. Fleshly screen is physical body. जो आपका will है वो कभी कभी आपकी physical body उसमें obstruction बन जाती है limiting spiritual and intellectual fulfillment. We write and I see her bosom heave. Speaker abruptly फिर change कर देता है और वापस आ जाता है प्रेजेंट पे ग्राउंडिंग एब्स्ट्रैक्ट रिफ्लेक्शन इन फिजिकल रियलिटी हर विजिबल ब्रीदिंग हाइटन्स इमोशनल इंटीमेसी उसको देख रहा है उसके बॉसम को देख रहा है देयर इज मेनी अ क्राउन फॉर हु कैन रीच 10 लाइन्स अ स्टेट्समैन लाइफ इन ईच क्राउन्स सिंबलाइज फेम पावर सक्सेस बहुत हैं फॉर हु कैन रीच अटेनेबल ओनली बाय अ फ्यू 10 लाइन्स अ स्टेट्समैन लाइफ इन ईच एक स्टेट्समैन का जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है इज रिड्यूस्ड टू अ फ्यू लाइन्स इन हिस्ट्री बुक्स minimizing real human effort. The flag stuck on a heap of bones, a soldier's doing what atones? War की image. Flag stuck on a heap of bones. Flag तो आप लहरा रहे हो, but maybe you are killing so many. Heroism is symbolized by a flag. Placed over death and destruction. एक सोल्जर कुछ करता है लेकिन उसको क्या मिलता है They scratch his name on the abbey stones. बस एक नाम लगा देंगे My writing is better by their leave. मतलब पूरा अगेन यूनिवर्सल पे जाके वो कंक्लूड करता है कि मेरा एक्सपीरियंस राइडिंग बिसाइड हर is still better. It surpasses the political or military glory. Personal emotional fulfillment तो है it outweighs public achievement. Next, what does it all mean, poet? Well, your brains beat into rhythm. You tell what we felt only. You expressed, you hold things beautiful the best and paste them in rhyme so side by side. It is something, nay, it is much. But then, have you yourself what's best for men? Are you poor, sick, old, your time? Nearer one with
your own sublime. Then we who never have turned a rhyme, sing writing's a joy for me I write. कहते हैं स्पीकर अब पोएट को एड्रेस कर रहा है, एक मेटा पोएटिक रिफ्लेक्शन ऑन आर्ट एंड इट्स वैल्यू. कहते हैं पोएट तुम क्या करते हो, तुम अपने ब्रेन को एकदम बीट करते हो राइम में लेके आने के लिए. पोइट्री को आप एक स्ट्रक्चरल इमोशनल एक्सप्रेशन बना के प्रेजेंट करते हो. जो हम सिर्फ फील करते हैं तो वो तुम एक्सप्रेस करते हो. और तुम क्या करते हो, यू होल्ड थिंग्स ब्यूटिफुल द बेस्ट. जो चीजें खूबसूरत हैं उसको तुम बहुत खूबसूरती से और प्रेजेंट करते हो एंड पेस्ट देम इन राइम, सो साइड बाय साइड. और उस आर्ट से तुम उसको मैनेज करते हो टू पुट देम ऑल इन राइम साइड बाय साइड, ऑर्डर एंड एवरीथिंग. इट इज समथिंग, ने इट इज मच. तो स्पीकर एक्नॉलेज कर रहा है पोइट्री की वैल्यू, बट इंट्रोड्यूसेस अ क्रिटिकल रिजर्वेशन ऑल्सो. हैव यू योर सेल्फ व्हाट्स बेस्ट फॉर मैन. क्वेश्चन कर रहा है whether poets personally attain that happiness और fulfillment जो वो डिपिक्ट कर रहे हैं. क्या तुमने कभी एक्सपीरियंस किया ये दैट इज बेस्ट फॉर मैन दैट यू राइटिंग इन द पोएम. आर यू पुअर, सिक, ओल्ड एट योर टाइम. अ पोएट इज स्टीरियोटाइप्ड एज फिजिकली एंड मटीरियली डिप्राइव्ड. तुम पुअर हो, सिक हो, ओल्ड हो, क्या हो. सजेस्टिंग द कॉस्ट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन, नियरर वन विथ योर ओन सबलाइम. कहते हैं he doubts whether poets actually reach the ideal or sublime that they imagine and they put down in poetry than we who have never turned a rhyme. Ordinary people, although we are not able to express, maybe no worse off in terms of lived fulfillment. Maybe जितना तुम एक्सप्रेस कर पा रहे हो वो तुम जी नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में. Sing writing's a joy for me I write. It ends with a decisive affirmation कि मैं तो ठीक हूँ. तुम poets, so you are singing about joy, but I am living it directly. And you, great sculptor, so you gave a score of years to art, her slave, and that's your Venus. Whence we turn to yonder girl that folds the one. अब वो sculptor पे आ गए कि तुम great sculptor, तुमने क्या किया. तुम इतने सालों से आर्ट बना रहे हो, तुम तो उसके स्लेव हो और वो तुम्हारा वीनस है. Whence we turn to yonder girl that folds the burn. तो कहते हैं कि sculptor has devoted so many years, a score of years, 20 years of his life in servitude to art, suggesting sacrifice, and finished the statue of Venus represents idealized beauty. Venus, god of beauty, goddess of beauty, idealized beauty achieved through labor. To yonder girl that fords the burn. Speaker contrast कर रहे हैं उस statue को with a real living girl crossing a stream. Burn is a stream, implying that physical beauty surpasses artistic imitation. कि तुम तो उस Venus को बना रहे हो या जो भी है, you turn to something beautiful to imitate, but we turn to yonder girl, to a real life living girl जो stream के किनारे चल रही है. You acquiesce and shall I repine? What man of music, you grow grey. If the sculptor accepts this limitation of art, तो जो स्पीकर है वो सजेस्ट करता है that he has no reason to complain about his own failures in love. बेसिकली वो कह रहे हैं हर एक बंदा ऐसा ही है, किसी को पूरी तरह से फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है. The address then shifts to a musician who has aged in his pursuit of art. What man of music, you've grown grey, with notes and nothing else to say. So, despite a lifetime of musical composition, his work remains abstract and intangible. Musical composition hai. Is this your sole praise from a friend? म्यूजिशियन का रिवॉर्ड क्या है, मिनिमल. सिर्फ वर्बल अप्रिसिएशन, आप वाह वाह तुमने क्या म्यूजिक बनाया, बस. Greatly his operas strains intend. To praise is qualified and indirect, suggesting potential rather than fulfillment. But in music, we know how fashions end. हर एक एरा का एक सिंगर आता है और फिर वो गायब हो जाता है. Fame is transient. Even great music is subject to changing tastes. I gave my youth, but we ride in fine. कह रहा है कि मैंने अपना यूथ दे दिया इस चीज को.
The phrase in fine emphasizes final judgment. Lived experience outweighs artistic legacy. Who knows what's fit for us? क्या पता हमारे लिए क्या है? Had fate proposed bliss here should sublimate my being had I signed the bond. Still, one must lead some life beyond, have a bliss to die with, dim, descried, this foot once planted on the goal, this glory garland around round my soul. Could I descry such? Try and test? So he says, who knows हमारे लिए क्या है? अगर फेट ने ये प्रपोज किया होता, he imagines fate offering perfect earthly happiness, capable of elevating his entire being. Had I signed the bond, फेट के साथ अगर मैंने कोई बॉन्ड साइन किया होता, still one must lead some life beyond. Even perfect happiness would require continuation. Life must go on beyond a single moment. Have a bliss to die with. Dim decried. कहते हैं कि हैप्पीनेस को भी मीनिंग तभी मिलता है जब partially unknown or incomplete, something to aspire towards, something at death, even at death. So happiness gains meaning when partially unknown and incomplete, something to aspire towards. कहते हैं ना कि सच की अहमियत तभी है जब झूठ एग्जिस्ट करता है. This foot once planted on the goal, this glory garland round my soul. So reaching absolute fulfillment would halt striving and desire. कि अगर आपको पूरी आप आज बोलो कि आज मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई, तो what will your heart aspire for then? Nothing. You have nothing to look forward to. बोलते ना satisfied, कई बोलते हैं होना चाहिए, कई कहते हैं नहीं होना चाहिए. So the imagery of a victor's wreath symbolizes final triumph and closure. Could I describe such? Try and test? So he challenges the idea of complete fulfillment, testing its emotional viability. I sink back, shuddering from the quest. एक thought है of total attainment, and that terrifies him. ये सोच के कि complete fulfillment हो जाएगा तो फिर क्या? It would negate the human impulse to strive. Earth being so good, would heaven seem best? Earthly experience is already rich and meaningful. Heaven may not surpass it. या फिर, if your quest is done, then would heaven seem then best? Now heaven and she are beyond this ride. अब कह रहे हैं हम तो इसके beyond ही हैं अब. You know, both divine perfection and permanent union with the beloved lie beyond the present moment. And yet, last stanza, she has not spoke so long. कुछ बोल ही नहीं रही है. What if heaven be that fair and strong at life's best with our eyes upturned? With the life's flower is first discerned, we fixed so ever should so abide? What if we still ride on? We too, with life forever old yet new, changed not in kind but in degree. The instant made eternity, the heaven just proof that I and she ride together, forever ride. तो क्या कह रहे हैं? He notices the woman's prolonged silence. एक स्पेस वो बना रहा है फॉर रिफ्लेक्शन एंड इमेजिनेशन, क्योंकि वो चुपचाप बैठी है. What if heaven be that fair and strong? So कहते हैं, he begins to speculate, redefining heaven not as a distant afterlife, but as something immediate. What if heaven be that fair and strong at life's best with our eyes upturned? Heaven is imagined as a moment of heightened awareness. ऐसा एक moment आपकी लाइफ में जब आप हाइटली अवेयर हो, and aspiration within life itself. तो क्या वही heaven है? Whether life's flower is first discerned. Flower symbolizes the peak or essence of life, its most intense moment. We fixed so, ever should so abide. So you wonder कि अगर heaven could mean remaining eternally in such a perfect moment, कि क्या ये heaven है? What if we still ride on, we too, with life forever old yet new? क्या
होगा अगर हम if we keep on riding, if we continue sharing this experience. So life is imagined as simultaneously familiar and fresh, unchanging in essence, lekin renewed endlessly, old yet new, changed not in kind but in degree. तो रिलेशनशिप वुड नॉट ट्रांसफॉर्म फंडामेंटली, सिर्फ उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा. द इंस्टेंट मेड इटर्निटी. उस इंस्टेंट को ही वही हमारी इटर्निटी है. एक फ्लीटिंग मोमेंट एलिवेटेड इनटू टाइमलेसनेस. एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी राइड टुगेदर फॉर एवर राइड. तो लाइफ ये हेवन इज रीडिफाइंड अगेन एज कंपेनियनशिप rather than reward or perfection. Heaven just prove that I and she ride together. Repetition. Forever ride. Poem ends with motion rather than closure, suggesting endless striving rather than final rest. That's ends. ठीक है. So dramatic monologue है, psychological depth है, there's philosophy है of striving and failure, rejection of absolute fulfillment is also there, then art versus life, time, eternity, and the moment is another theme. Optimistic humanism is there, unlike the darker poems of Browning like Porphyria's Lover or My Last Touches. ये वाली poem थोड़ा psychologically हेल्दी स्पीकर दिखाया है, कोई क्रेजी नहीं है. So Last Ride Together is not a poem of romantic defeat, but of philosophical victory. Browning transforms rejection into transcendence, arguing that human worth lies not in possession, success, or permanence, but in intensity of experience, acceptance of limitation, and continual strive. So ultimately, it celebrates life as movement, forever riding, never finally arriving. Please go on to read the themes and try and write one answer at least daily. उसका आपका practice होगा for your mains. ठीक है? See you in the next one.